Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapit School. I hope you all are fine and safe in your home. So students, this is our first introductory class of subject science. So today we will start the first chapter of science, which is food. Where does it come from? So students, you all must have your favorite foods, isn't it students? आप सब रोज़ बहुत तरह के फूड्स खाते होंगे और आप सभी के कुछ फेवरेट फूड्स भी होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये फूड्स आपको कहाँ से मिलते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है? So today we will study that only from this chapter, that from where does the food come. So student, at first we will study the variety of foods we all eat. So students, here the variety, हम रोज़ बहुत तरह के खाना खाते हैं और ये खाना कुछ बहुत चीज़ों पे डिपेंड भी करता है, ठीक है, निर्भर भी करता है। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हम क्या प्रेफर करते हैं? ब्रेड जैम, एग एंड ऑमलेट, उपमा, पोहा एंड पराठा। दीज आर ऑल द प्रेफरेंसेस विच वी मेनली प्रेफर on our breakfast. Okay, so similarly on lunch and dinner we prefer chapati, rice and dal, idli and dosa, fish, चिकन इत्यादि। ये सब हम लोग लंच एंड डिनर में हम लोग ये प्रेफर करते हैं। सो दीज वैराइटीज आर मेनली बेस्ड ऑन टाइम, लाइक ऑन ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ओके, सो दी ऑल्सो द फूड्स वेर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन्स। ओके, सो सीजन्स में भी बहुत सारे फूड डिपेंड्स करते हैं। तो लाइक वी ऑन समर सीजन वी मोस्टली प्रिफर मैंगोज, कोकोनट वाटर, watermelons, fruit juices, ice creams, cucumbers. We mostly prefer these items on summer season. But in winter season we prefer hot tea, hot coffee, hot soup, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, गाजर का हलवा and jalebi. Okay, so these are the preferences which are varieties of food which depends on seasons. So now we will study the food preferences which varies regionally also from state to state. आप सभी को ये पता होगा कि बहुत सारे हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड्स फेमस हैं। जैसे कि इन साउथ इंडिया दे प्रेफर डोसा, वड़ा, इडली, बट इन गुजरात दे प्रेफर ढोकला एंड लाइक फाफड़ा एंड मेनी अदर fruits. But in Punjab they prefer makke di roti, sarson da saag, lassi, like these kind of foods. But in Bihar they prefer litti ka chokha. And in North India they prefer momos. And in West Bengal, as you know all, that West Bengal is famous for rasgullas and fish curries. Okay, so these are the varieties of food which varies from state to state. Now students, we will study that what does food gives us. Okay, so eating a variety of healthy foods provides a range of different nutrients to the body, which promotes good health and helps to protect ourselves against diseases. So students, what does this food gives us? Food gives us nutrients. Nutrients means carbohydrates, fats, proteins, vitamins. These are all the nutrients which foods provide us. Okay, when we eat some fruit it gets digested in our body and provides us energy. Okay, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे अंदर वो डाइजेस्ट होकर हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, और जिससे कि हमें गुड हेल्थ मिलता है और हमको कोई डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, सो व्हाट आर द फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज? जो भी हम फूड मटेरियल्स खाते हैं तो उनके सोर्सेज क्या है, मतलब वो कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, these trees are plant sources. Okay, so we get these trees from plant sources. These are the examples of the three sources. And like these two sources which are dairy products and milk, meat and poultry, these are from animal sources, because we get milk, cheese, curd, eggs, chicken, fishes are from animals, so that's why they are called animal sources. Okay, now we will define the terms, that is plant sources. So what is plant sources? The food products which we get from plants are known as plant sources. For example, wheat, pulses, fruits, etc.
And what are animal sources? The food products which we get from animals are known as animal sources. For example, milk, eggs, chicken, etc. Okay, you all understand this? So what are the food items were made of? आप सबको ये भी सोचने को मिलेगा कि ये जो हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं तो ये एक ही चीज़ से तो बनता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से एक फूड आइटम, एक फूड डिश हम लोग का तैयार होता है. तो किन उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. द फूड आइटम्स और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. कोई भी डिश बनाने के लिए जो हम लोग को फूड आइटम्स या फिर कोई सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. जैसे कि चपाती एंड रोटी इज मेड अप ऑफ आटा एंड वाटर, सो दीज आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स. ओके, फॉर मेकिंग दाल वी नीड पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस, सो दीज आर ऑल कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. फॉर राइस वी नीड राइस, ग्रेन्स, वाटर. For curry or sabzi we get vegetables, oil, salt and spices, water. Okay, so these are all the ingredients and the food items which they were made of. Okay, so now we will study the ingredients used to prepare the food items and their sources. तो ये ingredients या फिर ये food items को इंग्रेडिएंट्स जो फूड आइटम्स को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है उसके सोर्सेज क्या हैं. जैसे कि हम सब ने पढ़ा था कि देयर आर टू सोर्सेज विच आर प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. सो फॉर मेकिंग इडली द इंग्रेडिएंट्स वी नीड आर राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, सो ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? प्लांट सोर्सेज से मिलता है. अब सभी को ये पता होगा कि ये प्लांट सोर्सेज से मिलता है. So for making chicken curry we need chicken, oil or ghee, salt and spices. So these are come from both animal and plant sources. Why both animal and plant sources? Because chicken is a animal sources. Okay children, and these are all our plant sources. Okay, here salt is neither plant or animal sources. Why? Because salt is made up of salty water which we get mostly from ocean or sea. Okay, so what are this kheer made up of? So kheer is made up of milk, rice and sugar, and here is they are also both animal and plant sources. Why? Because we get milk from cow which is an animal source and rice and sugar from plant sources. Okay, so now we will study that plants are one sources of our food. We know that plants are one source of our food. That's why we eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. Sometimes we roots, sometimes stems and even flowers. So here students, you all see that the parts of a plants which are flower, fruit, stem, leaf and roots. Okay, so these are all the parts of a plant. So children, हम लोग हर एक पार्ट को, हम लोग जब कोई प्लांट सोर्सेज को खा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एक पार्ट को खा रहे हैं. जैसे कभी फ्रूट्स को खाते हैं, कभी किसी प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं, कभी लीव्स को भी खाते हैं. तो इस हिसाब से हर एक प्लांट के पार्ट्स को हम एक कोई जो प्लांट्स के पार्ट्स को हम खाते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एडिबल पार्ट्स बोल सकते हैं. तो what are edible parts? So those parts of a plant which are eatable are called edible parts. तो जो plants के part हम लोग eatable मतलब खा सकते हैं उनको बोलते हैं edible parts. Okay, some plants have 2 or more edible or eatable parts. Okay, कोई plants के 2 और उससे भी ज़्यादा edible parts होते हैं, मतलब हम लोग उससे भी ज़्यादा parts खा सकते हैं. जैसे कि mustard plants, उसके सीड्स को हम सीड्स क्या करते हैं? सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल देता है एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स. और लीव्स को किस तरीके से यूज किया जाता है? वेजिटेबल्स बनाने के तरीके से यूज किया जाता है. ओके, सो हियर आर सम प्लांट्स पार्ट्स व्हिच वी यूज एज जस्ट लाइक सीड्स. कोई कौन से प्लांट्स के हम लोग सीड्स को खाते हैं? जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस एंड मस्टर्ड. फ्रूट्स, मैंगो, टोमेटो, जैकफ्रूट, ब्रिंजल. लीव्स, पालक, पुदीना, कैबेज, मेथी. स्टेम, पोटैटो, गार्लिक, ऑनियन. रूट्स, कैरेट, रेडिश, बीटरूट. ओके, एंड फ्लावर्स, cauliflower and broccoli. So these are all the examples of plants parts which are used as foods. Okay, so for today this is the we will complete the remaining chapter in the next video. Okay, so
We will meet in the next video. Till then, you all read the chapter and trying to understand it. I hope I make your science class very interesting. If you have any doubt, you can ask me without hesitating. Till then, you can do the activity number 1.4. Try because I know you can all do it. And also the exercise question number 2 is your होमवर्क. ओके, आप सभी इसको अच्छे से चैप्टर को रीड करिए और एक बार, और जो नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ जो रिटन नोट्स है, आप उसको फेयर कॉपी में कॉपी कर लीजिए, ठीक है. और चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए. अगर कोई डाउट हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने बहुत कोशिश की कि आपके चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा भी होगा. सो टिल देन, stay safe in your home and study. We will soon meet in the next video with the remaining part of this chapter. Bye students.